Am I clearly audible? Am I clearly audible? Yes. Very good. So do we have any doubt from the polity current affairs? Any doubt we have from the polity current affairs? Tell me. No? Very good. So today we will be beginning the current affairs for environment and ecology. Okay. We will be starting with environment and ecology. Chaliye. So environment ecology, beta, one of the most important topic. Okay. One of the most important topic of the prelims is environment. Reason you all know, because it is also having the common prelims with the Indian Forest Services, right? So we will be giving a lot of time to environment and ecology current affairs. ठीक है बच्चों, बहुत आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है. Reason being, questions आते हैं, ठीक है? Questions आते हैं, इसलिए हम लोग आराम से करेंगे. Very good. Now let us begin with environment and ecology. Now, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आप लोग डरिएगा मत. आप लोगों को देखा होगा कि बहुत सारे पेजेस हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं ना. कुछ लोगों को घबराहट होगी. बेटा टॉपिक्स ज्यादा इसीलिए है क्योंकि हमने सब टॉपिक्स कवर करे, बट नॉट एवरी टॉपिक इज टू बी रेड अगेन एंड अगेन. सम टॉपिक्स, जैसे ये जो 6 पेज है, ये जो 5-6 पेज है, ये इस पेज में खत्म हो जाएगा. ठीक है. So images are also provided to you. So do not think that the topics are so much and it will be very difficult for us. Now you all know that there was a conference of parties 26 under the aegis of United Nations Framework for Climate Change, Framework Convention for Climate Change, UNFCCC, right? Where was that meeting held? Paris. Paris. कहाँ हुई बच्चों? था नहीं, ग्लासगो. ओके, स्कॉटलैंड में पड़ता है ग्लासगो. ओके, GLASGOW. सबसे पहला क्वेश्चन यही बन सकता है that where was the conference of parties 26 held? Okay, this could be the one of the question. Clear? So it was held in the region of Glasgow, which is the part of United Kingdom, and United Kingdom it is the part of Scotland. ठीक है. तो बहुत सारे contributions discuss हुए हैं, बहुत सारी चीजें were discussed in this meeting of COP26, right? So in this meeting क्या क्या discuss हुआ है? We'll be doing it slowly. पूरी meeting हम एक साथ नहीं करेंगे, जहां जहां जैसे जैसे होगा we'll be discussing that. Now इसमें सबसे बड़ी जो बात है, the biggest discussion that was happening there was about the carbon neutrality or the net zero emissions. Okay, it was in news, it is discussed so many times, so we need to understand what is net zero emissions. Okay, so net zero emissions means when your emissions and the mitigation of emissions or the absorption, it is equal. आप जितना emit कर रहे हैं and जितना आप control कर रहे हैं, that is zero. Okay, that is the meaning of Z, net zero emissions. It means the emissions which are, ऐसा नहीं है, net zero का मतलब नहीं है there is no emissions. Do not get confused. There may be an option that net zero emissions means no emissions. Net zero emissions का मतलब होता है that the emissions are zero in emission and adaptation. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास, आपने कोई चीज खरीदी, मान लीजिए ये पेन आपने 50 रुपीज का खरीदा, ठीक है, एंड आपने ये पेन 50 रुपीज में सेल भी किया, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? नेट प्रॉफिट. व्हाट इज द नेट प्रॉफिट? 0, राइट? बट
आपके पास उस टाइम पैसे कितने बचे हैं? 50। आपके पास तो 50 है, आपने कुछ तो किया। आप ये नहीं कह सकते जीरो प्रॉफिट है तो आपने कोई बिजनेस नहीं किया, आपने कुछ तो किया। इट्स जस्ट दैट द नेट इफेक्ट वाज जीरो। दैट इज द मीनिंग ऑफ नेट जीरो एमिशंस। ओके, अब समझिए कि इंडिया ने बात करी है टू रीच नेट जीरो एमिशंस टिल विच ईयर? कौन सी ईयर तक बच्चों लाने की बात करी है? 2070। ओके, India wants to reach net zero emissions 2070. Okay, so it is the India's commitment to the UNFCCC. Now, is the India only country that have given these targets? Is India only country? बताइए, is India only country? No, India के साथ साथ there are other countries also that have had these commitments. कितनी है? Approximately 70 countries are there, and they have given their commitments to reach net zero emissions by the middle of the century. यानी USA by 2050, China by 2060, right? USA 2050, China 2060, India 2070. So these are the targets, right? Now, India कैसे करेंगे ये टारगेट अचीव? ये भी तो क्वेश्चन है। ये तो हमने समझ लिया that India will be having certain targets that we want to have net zero emissions by 2070. How will we achieve that? Right? So India will achieve those targets by reducing our emissions, increasing our renewable energy. Okay, reducing emissions, increasing our renewable energy, and also increasing our contribution of electricity through renewable purposes. तो हम लोग क्या क्या करेंगे? इंडिया ने 5 प्लेज लिए, ठीक है? अमंग्स दिस, वन प्लेज इज बाय अचीविंग 2070 नेट जीरो। ये कैसे करेंगे? वी विल इंक्रीज आवर नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी टू 500 गीगावाट बाय 2030। बेटा ये मेंस में क्वेश्चन आया है इस बार ऑप्शनल में, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द कमिटमेंट्स ऑफ इंडिया इन सीओपी। ये पांचों आपको पता होने चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। So, what are the commitments? The first commitment is that India will increase its non-fossil energy capacity to 500 gigawatts by 2030. Okay. Second, India will meet 50% of its energy requirements by renewable energy by 2030. एक तो अपनी कैपेसिटी हम लोग बढ़ाएंगे 500 गीगावाट by 2030, अपनी जो कंजम्पशन है उसमें 50% इंक्लूड करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। हमारे जो कार्बन एमिशंस हैं वी विल रिड्यूस देम बाय 1 बिलियन टन्स फ्रॉम नाउ और 2030। ठीक है, इंडिया जनरली इट एमिट्स 3.3 बिलियन टन। ओके, 3.3 बिलियन टन कार्बन एमिशंस अ ईयर। तो अगर हम इसको 1 बिलियन टन कम कर देंगे तो वी विल बी रिड्यूसिंग अप्रोक्सीमेटली 2.5 to 3% ऑफ आवर कार्बन एमिशंस। ओके, so renewable energy will increase 2.2 to 2.5% carbon emissions we will decrease, and we will also reduce the carbon intensity of its economy by 45%. Okay, carbon intensity of economy is the economy that is dependent upon the carbon dioxide or the greenhouse gases. उसके डिपेंडेंस हम कम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम व्हीकल्स चला रहे हैं तो रादर देन हैविंग द कोल बे और द फ्यूल बेस्ड व्हीकल, दैट इज द पेट्रोल और डीजल और सीएनजी बेस्ड व्हीकल, हम लोग कौन से यूज करेंगे? हम विल बी यूजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, विल बी यूजिंग हाइड्रोजन व्हीकल्स, तो ये सब करेंगे। प्लस विल अचीव नेट जीरो टारगेट बाय 2070। क्लियर है? 5 प्लेजेस समझ में आ गए हैं। फर्स्ट, 500 गीगावाट बाय 2030, 50% energy requirements from renewable energy by 2030, reduction in 1 million tons from now to 2030, reduce carbon intensity of economy by 45%, and net zero by 27. Is it clear? समझ में आ गया है? Very good. बेटा दूसरा क्वेश्चन जो बन सकता है, exact definition of net zero. So net zero, what does it mean? It refers to a balance of emissions of greenhouse gases are offset by absorption of an equal amount from the atmosphere. Okay, is it clear? So exact definition आ सकती है। Now China wants to have the net zero emission by 2060, but it was not announced on the COP 26. China announced that before itself.
COP26 में चाइना ने अनाउंस नहीं किया था. नाउ यूएसए 2050 में नेट जीरो होगा और इंडिया 2070. यहां तक समझ में आ गया व्हाट इज इंडिया कार्बन न्यूट्रलिटी? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? बताइए. यस? अच्छा, इतने सब लोग ढीले क्यों हैं? बाकी छोड़े, पढ़ाई तो बाद में करेंगे. ढीले क्यों है इतने सब लोग? गुस्सा हो कि वेंसडे बोला थर्सडे को आया? नाराज हो? नहीं? ठीक, चलिए. तो लेट अस गो टू द नेक्स्ट टॉपिक. अच्छा फास्ट. तो बेटा अब तो टाइम हो गया, अब तो खुल गया होगा पास. कभी नहीं हो गया? 6:45 7:30 तक तो खुल जाता है ना? हाँ, लेकिन धीरे धीरे बॉडी में ताकत पहुंचते हुए टाइम तो लगेगा. चलिए, ईद कब है? 2 मई को? मे बी 3rd और 2nd सर. 2nd 3rd है ना वो, मतलब वही टेंटेटिवली. ठीक. चलिए, सो दिस इज व्हाट इज द आइडिया. अब सेकंड है ये बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आर्कटिक पॉलिसी से क्वेश्चन पहले भी आ चुका है. आर्कटिक काउंसिल से देयर हैज बीन अ क्वेश्चन, राइट? सो देयर इज अ क्वेश्चन ऑन इंडार्क आल्सो. तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो इस साल आर्कटिक से रिलेटेड कुछ भी आपको दिखे पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इंडिया हैज अनवेल्ड इट्स आर्कटिक पॉलिसी. ओके, सो आर्कटिक पॉलिसी किस लिए? इट इज रिगार्डिंग अ पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द आर्कटिक रीजन. इंडिया ने अपनी आर्कटिक काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप में भी इंटरेस्ट शो किया है ना? सो इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट. नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पॉलिसी? ये पॉलिसी फोकस करती है first to strengthen national capabilities and competencies in science and exploration, climate environmental protection, maritime and cooperation in the Arctic region. Okay, then it seeks institutional and human resource capacity within the government and other sectors for the India's interest in the Arctic. It wants to enhance the understanding of the impact of climate change on the Arctic region of India's climate. Okay, ये लॉजिक से आप लोग सोचोगे नहीं इतनी दूर से कहां से हम इंडिया में रीड कर पाएंगे, तो लॉजिक से आप इसको गलत कराओगे. लेकिन दिस इज व्हाट वी नीड टू आइडेंटिफाई कि आर्कटिक में जैसे पोलर रीजन में क्यों मेल्टिंग हो रही है, इससे वी कैन अंडरस्टैंड आवर इश्यूज आल्सो. इट आल्सो प्रमोट बेटर एनालिसिस, प्रेडिक्शन एंड कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी मेकिंग ऑफ आर्कटिक ऑन इंडियाज मिलिट्री एंड स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट because of the exploration of mineral wealth in this region. New global shipping routes may open with the melting of Arctic ice. Okay, so this is what our focus is. The policy also seeks to study the linkages between the polar regions and the Himalayas and deepen the cooperation between India and the countries of the Arctic region under various Arctic forums, expertise and traditional knowledge. The policy also seeks to increase the India's participation in the Arctic Council and improve the understanding of the complex governance structure in the Arctic, relevant north and geopolitics in the region. तो ये सब चीजें फोकस करना चाहता है of the India's Arctic policy. Okay. Now what are the key pillars? Science and research, environmental protection, economic and human development, transportation and connectivity, governance and international cooperation, and national capacity building. It wants to focus upon these 5 areas. Clear? समझ में आ रहा है? Yes or no? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? This is India's Arctic policy. इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा. Okay? Now question आ सकता है which of the following countries they lie in the Arctic region. Okay, तो कौन कौन सी कंट्रीज हैं बेटा आर्कटिक रीजन में? एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में. ठीक है, तो यूएसए है बिकॉज ऑफ अलास्का, कनाडा, देन डेनमार्क इज देयर बिकॉज ऑफ ग्रीनलैंड, आइसलैंड इज देयर, नॉर्वे इज देयर, स्वीडन इज देयर, फिनलैंड इज देयर, रशिया इज देयर. ओके, राइट द नेम ऑफ दीज कंट्रीज: यूएसए, कनाडा, डेनमार्क, आइसलैंड, Norway, Sweden, Finland, and Russia. And these are the 8 members of Arctic Council also.
Okay, these are the 8 members of Arctic Council also. यही क्वेश्चन आया, which of the following are the members of Arctic Council? So write it down wherever you want, wherever you are preparing your notes. Done, everyone? Yes or no? Very good. Now the new rules have been released for plastic waste management. बेटा यूपीएससी में ये भी आ चुका है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 आ चुके हैं, राइट? सो द क्वेश्चन कैन कम विद रिस्पेक्ट टू द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2020. तो क्या क्या चेंजेस आए हैं, लेट अस डिस्कस दैट. नाउ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, इट कम्स अंडर द व्हिच मिनिस्ट्री? तो बहुत सिंपल है, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. ओके, नाउ क्या क्या रूल में चेंजेस है? तो पहला, these rules are regarding the classification of plastics. The new rules, they are classifying plastics into various categories. The first category is regarding the rigid plastic packaging. That there will be a rigid plastic packaging which will be included in this category. Second will be regarding the flexible plastic packaging, which includes single layer plastic and multi-layer plastic. The sheets, the bags, the pouches that are not only single layer, that are multi-layer. The third category is multi-layered plastic, which includes plastic plus any other material. Rigid plastic, single and multi-layered plastic. Third, multi-layered plastic, which includes any other material in addition to the plastic. And fourth material, or the fourth material, is the plastic sheet that is made using the, or that is made of the compostable plastics. Okay, that is made of the compostable plastic. That is the plastic which is based upon the biodegradable. Okay, biodegradable plastic. अब ये जो 4 कैटेगरीज है, इसमें से the government will be promoting the reuse of the rigid plastics. There will be a reuse of rigid plastics. Why? Because they can be very easily recyclable. Okay, there are certain plastic bags that is multi-layered or that is of rigid plastic that you reuse, right? Like plastic boxes. आपने प्लास्टिक बॉक्सेस देखे हैं जिसको आप घर में रख लेते हैं. फॉर एग्जांपल, एक बॉक्स में खाना आया, ठीक है, दैट इज रिजिड प्लास्टिक. अब उसने क्या किया, आपने उसको रीयूज ही करते हैं, आप लोग फेंकते तो नहीं है उसको जनरली, राइट? सो दैट इज रिगार्डिंग द न्यू रूल्स दैट देयर शुड बी मोर यूज ऑफ रिजिड प्लास्टिक, क्योंकि आपको भी थ्रो करने में दर्द आता है उसको, है ना? आता कि अरे इसमें पेन रख लेंगे, है ना, इनमें कर लेंगे, ये रख लेंगे, तो वी यूज इट, है ना? वेरी गुड. मोस्ट किसी ना किसी घर में ज्वेलरी रखने के भी लगा होगा एक ना एक बॉक्स, है ना? आते हैं वो सब चीजें, जरूर होता है ज्वेलरी के लिए, पेन के लिए. देखो सब पता लग रहा है किसने जिसने रखा हुआ, सब अपनी अपनी तरफ से रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ठीक है? तो होता ही है. या फिर रख लेते हैं, जब कुछ अच्छा बनाएंगे उनके घर पहुंचाना होगा तो उसी डब्बे में पहुंचाएंगे, थैली में अच्छा नहीं लगता है ना? चलिए, सो दिस इज द यूज ऑफ द रिजिड प्लास्टिक. तो क्यों यूज करना है? जिससे फ्रेश यूज ऑफ प्लास्टिक बार बार ना, ठीक है? दूसरा, there will be an enforceable prescription of minimal level of recycling, okay, which will be based upon the extended producer responsibility, जिससे कि प्लास्टिक कंजम्पशन रिड्यूस होगा and there will be support for recycling plastic packaging waste. Okay, so there will be the reduction and there will be recycling. ये किसके ऊपर होगा? That is with the producer responsibility. The main focus will be on the producers. कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि इसको रीयूज करना है. इट विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोड्यूसर. ओके, द लास्ट वन वाज एपिक. चलिए नहीं, जो सच हो तो सच है, सबने किया है अपने अपने जमाने में सब काम, है ना? चलिए, तो जो है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं आप लोग? मीन्स प्रोड्यूसर is not only having responsibility to ensure that they are producing sustainably. The producer is also having responsibility to ensure that whatever they have produced
that is being used in a sustainable. So इसके लिए they have also introduced the sustainable producer responsibility certificates, right? मान लीजिए आपने अच्छे से प्रोड्यूस किया, दूसरे आपके जो फ्रेंड है जिनका सेम ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से नहीं निभाई, आपने ज्यादा निभा दी. Okay, so you can exchange those certificates. Is it clear? So if you are over responsible, that should not be a disincentive for you. You can monetize it. So there is a purchase and sale of the extended producer responsibility certificates. Clear? जैसे फॉर एग्जाम्पल होता है ना, अगर आपने मान लीजिए 10 रुपीज आपको इकट्ठे करने थे, ठीक है, आपकी जिम्मेदारी थी आपको कलेक्ट 10 और आपने 20 कलेक्ट कर लिए. अगर आपको 20 कलेक्ट करने को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा तो आप 10 ही कलेक्ट करोगे, है ना. लेकिन अगर आपको वो जो एक्स्ट्रा 10 है उसका बेनिफिट मिल जाए तो इससे अच्छी बात क्या है? क्लियर? तो दिस इज द एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट. ये किस लिए है कि एक मैनेजमेंट सेटअप होता है, मार्केट मैकेनिज्म. क्योंकि देखिए जब मार्केट बन जाता है ना किसी भी चीज का तो चीजें बेटर हो जाती है. ठीक है, पहले आप जो मोबाइल फोन्स हुआ करते थे, व्हेन यू यूज्ड टू हैव दैट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, पहले पुराने मोबाइल फोन से क्या करते थे आप बताओ? पुराने मोबाइल फोन से क्या करते थे पहले? पहले आप लोग जो है सब बोले, दूरदर्शन से बाहर निकल के जो है वीडियो कॉल समझे इसको, ठीक है, सब शांत है. क्या करते थे आप पहले मोबाइल फोन का? फिर पुराना कि हमने तो एक ही लिया हो, वही चल रहा है तुमसे, है? व्हाट डिड यू जनरली डू? रखे रखते थे ना पहले, घर में मिल जाएगा ना अभी भी नोकिया 3300, है ना. किसी दिन कपड़े धोने हो, थपकी नहीं मिल रही है तो नोकिया 3300 से कपड़े धो लिए, है ना. दैट हैड द पावर. वेरी गुड. अब क्या करते हो? अब आपके पास मोबाइल फोन है पुराना, नया फोन लेना, आप क्या करोगे? एक्सचेंज करेंगे या फिर कैशिफाई, राइट? अब आप बच्चों को, अभी आप लोगों ने बोला वी यूज्ड टू गिव इट टू द किड्स टू प्ले. क्या अब आप अपने फोन किड्स को देते हो खेलने के लिए? नो, वी मोनेटाइज इट. यही करते हैं हम लोग. Yes, sir. This is what is extended producer responsibility certificate also. Well, it was a waste. Now it can be traded in the market. Now you understand the difference? Yes. Very good. So this is the beauty of this certificate. The other feature of this is that there will be a centralized portal. There will be a centralized portal where you can get the details of everything. Who is the producer? Who is the importer? Who is the owner of that brand? Where are the plastic waste processes? For example, you have so much of rigid plastic, okay? But you do not know where is the processing plant where I can get these resources recycled. तो आप क्या करोगे उन चीजों? यही है ना. जैसे मान लीजिए आपके पास एक पुराना व्हीकल है जो आप नहीं चलाते, ठीक है, जो नहीं चलाते हैं, इट इज ऑफ 30 years old. क्या करते हो उस व्हीकल में? या तो किसी को दे देते हैं या रखे रखते हैं, ठीक है. बट व्हेन यू आर मेड अवेयर अबाउट अ व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, क्या आप स्क्रैप भी कर सकते हैं इसको, तो यू विल फील कि इट्स बेटर, वी कैन अर्न सम मनी, राइट, वी कैन अर्न सम मनी. लेकिन आपको लगा अरे यार ये चलता तो है नहीं, इसको ले जाने की टेंशन, इसलिए आप फिर छोड़ दोगे. छोड़ो, लेकिन आपको अगर कहीं पे इंफॉर्मेशन मिले दैट द डिलीवरी विल बी टेकन बाय दैट कंपनी ओनली, तो आप बेटर, आपके लिए इजी रहेगा, राइट. द सेम थिंग will be provided on this portal. इस पोर्टल पे सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगी that how and when and where all these things are to be done, right? And this was to be made functional by 31st March 2022. Now this will be acting as a repository for everything related to the plastic waste management tool, and this portal will be run by the Central Pollution Control Board. Okay, so it will be under the Central Pollution Control Board.
Now there will also be an environmental compensation. अब मान लीजिए आपकी responsibility थी as a producer to ensure the things, because these plastic waste management rules, they follow a policy. They follow a very simple policy that is called as polluter pays principle. यानी कि pollution हो रहा है तो कौन पे करेगा? जिसने pollution फैलाया. फैलाया किसने pollution? Who is responsible for having the pollution? किसने फैलाया? Producer. Producer, because you, if you haven't made it, why you would be using it? Yes or no? If someone Yes. had not invented a gift wrap, okay, gift wrap, तो आप कभी gift wrap use ही ना करते, so it's the responsibility of the producer. अब अगर वो producer अपनी responsibility fulfill नहीं करेंगे, तो there will be certain fines on those producers. There will be certain ideas on those producers. Okay, is it clear? Sir, what about consumer end responsibility? But a consumer end responsibility to the consumer if it is not available. For example, if you go to a mall, okay, if you go to a mall and in that mall they are charging you 7 rupees for a paper bag, what will you be doing with that paper bag? Will you be throwing it on the road after use? You will yourself be recycling it. Yes. Because the consumer is already paying, right? Right. Right. So that is what itself, when the price is there for anything, the consumer will already take care of that. Are we clear? Very good. Now the polluter pays principle imposes a liability on a person who pollutes the environment to compensate. Okay. So when there is a fine, that fine will be used for compensate for the loss that has been done for the environment. Clear? यहाँ तक समझ में आया है? Committee to recommend, there will be measures. So there will be a committee constituted by the CBCB under the chairmanship of the CBCB chairman that will tell the measures how there can be better implementation of extended producer responsibility. Right? Our annual report will be submitted by the State Pollution Control Board or the Pollution Control Committees to tell that how they have identified the producers or the plastic waste creators in their region, and that report will be submitted to the CPCB. Okay, the report will not be submitted to the state. The state will be submitting an annual report on EPR portal. Okay, then what are the benefits? Do we need to tell you the benefits of you reducing the plastic waste? Yes or no? Tell me. Yes, sir. Very good. So these are the plastic waste management rules. I would like you to go through these rules again. First, that there will be four categories: multi-layered, rigid plastic, multi-layered and single-layered. Third, multi-layered with any other material. Fourth is compostable. Plastic packing will be focused upon the rigid particle. EPR certificates will be introduced. Then there will be a centralized online portal. There will be environmental compensation. There will be a committee to recommend measures. There will be an annual report and there will be signature with the guidelines. Okay. Is it clear? Sir, are these rules notified in the Environment Protection Act 1980? Yes, better. Everything is under the Environment Protection Act. Okay. Everything is under the Environment Protection Act. समझ गए? अब ये 2022 है, इनसे पहले भी कुछ रूल्स आए थे. उनसे पहले भी कुछ रूल्स आए थे. वो क्या रूल्स थे? कि हम लोग हमारी कंट्री में by 1st July 2022, by 1st July 2022, we will be doing away with the plastic waste that is called as single-use plastic. Okay, by 1st July 2022.
अब क्या क्या बैन होगा? These ban, अब ध्यान रखिएगा, that was in the 22, this will be the 21 rules. That is your responsibility to remember what was there in the 22 rules and what is there in the 21 rules. I am pinpointing it, what is the difference, but it is your responsibility to remember. 21 is about doing away with the single-use plastic. Now what will be doing? They will be prohibiting the manufacture, import, stocking, distribution, sale, and use of the single-use plastic. That will also be including polystyrene and expanded polystyrene. Okay, it will be including polystyrene and extended polystyrene. Are we clear? Now, क्या ban होगा 1st July 2022 से? Earbuds with plastic, क्योंकि बेटा क्वेश्चन ही आ सकता है, which will be counted as a single-use plastic. Okay, this can be the question. जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, which of the following is this, which of the following contains lead, आता है ना, एक क्वेश्चन आया था कि लिपस्टिक में lead होता है कि नहीं होता है, हाँ? याद है यूपीएससी क्वेश्चन था, which of the following contains lead? In this, lipstick was also one of the option. Clear? समझ में आया? बहुत पहले की बात है, 2015-16 की है, हम याद है हम लोग कर रहे थे, तो जब बताया हमने आंसर बताया आपको। अच्छा, लेड होता है कि नहीं होता लिपस्टिक में? लेड होता है कि नहीं होता? बोलो गाइस, मतलब गाइस नहीं, गर्ल्स। No, sir. I don't know. There is no lead? No? तो बेटा लेड फ्री क्यों बोलते हैं? कभी कभी सुना होगा लेड फ्री, सुना है? कभी कभी बोलते हैं लेड फ्री लिपस्टिक, है ना? आप लोग सब जवाब क्यों नहीं दे रहे? ये तो इंटरेस्टिंग बातें हैं, है? याद करो बॉबी ब्राउन, बॉबी ब्राउन ही होता है ना? I don't know, sir. How you know the name? बेटा, I am married and I married after a long period of dating. Okay, so all these things are made aware to me. जैसे आप लोग हम करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं ना, तो ये हमारे लिए करंट अफेयर्स है कि मैक कहाँ खराब है और वेयर इज बॉबी ब्राउन गुड. ओके, नाउ ये लेड होता है लिपस्टिक में एज पर द यूपी. एक बार आप लोग, बट स्टिल यू गो एंड चेक इट. ठीक है, गो एंड चेक इट. लेकिन हम याद है एक बार पढ़ा रहे थे, जब आंसर था तो एक स्टूडेंट ने बोला याद करने के लिए कि सर वो गाना याद रखेंगे कि जहर है कि प्यार है तेरा चुम्मा. ठीक है, उससे वी विल रिमेंबर दैट देयर इज लेड इन द लिपस्टिक. ओके, सो दिस इज द वे यू मस्ट रिमेंबर. एक बार फिर भी क्रॉस चेक कीजिएगा यूपीएससी आंसर की से. ठीक है, यूपीएससी आंसर की से क्रॉस चेक कीजिएगा. तो इट विल बी ईयरबड्स विद प्लास्टिक स्टिक्स फॉर बलून्स. ओके, प्लास्टिक फ्लैग्स, candy sticks, ice cream sticks, polystyrene. Polystyrene means thermocol. Okay, polystyrene means thermocol that is used for decoration. So polystyrene for decoration will not be allowed. Then plates, cups, glasses, cutlery such as fork, spoon, knife, straw, trays, wrapping or packing films around sweet boxes, invitation cards, cigarette packets, plastic or PVC banners less than 100 microns and stirrers, they will be banned. All these things will be banned. So these things you must keep in your mind, and this question may come. I feel yeah, question आ सकता है, which of the following will be part of single-use plastic. Okay? ये बहुत मतलब जोर से लग रहा है कि आ सकता है, इसीलिए इसको इतना टाइम लगा रहा है. ठीक है, अगर any of the commodities amongst this, they are made of the compostable plastic. Okay, if they are made of the compostable plastic, then this ban will not be allowed. For example, ice cream stick आपने देखा होगा, कुछ जो है they are made of wood. और wood तो नहीं बोलेंगे उसको, लकड़ी होती है, पता नहीं किस चीज का बना होता है, इतना हमको नहीं पता है, लेकिन होता है ना जो लकड़ी टाइप जैसे होता है आइसक्रीम स्टिक, that is not banned.
ठीक है, या फिर straws made of paper. You must have seen the straws made of hard paper. They will also not be banned. Is it clear? So we must know. Now, these commodities that are not included, any commodity that is not included, the government has given 10 years from the date of notification for banning these. मतलब ये तो 1 July 2022 से हो गई ban. Anything which is not mentioned and it includes plastic materials, for that the time of 10 years will be given. To comply with the notification. Now, plastic bags 50 microns के allowed है, ठीक है? That has increased to 75 microns, and till 31st December 2022 that will be increased to 120 microns. Okay, why? To increase their recyclability. So question aa sakta hai, why thick plastic bags are allowed? Because they are recyclable. Clear? Now who will be the monitoring responsibility or the agency? It will be Center Pollution Control Board, and the penalties will be under the Environmental Protection Act 1986. Okay, the penalties will be under this. Are we clear? Very good. चलिए आगे बच्चों. अब प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल के हम लोगों ने we have seen the amendments, 21 amendment, 22 amendment. ओरिजिनल क्या था, है ना? जब भी रिमिक्स सुनते हैं तो ओरिजिनल तो हमेशा रिकमेंडेशन में आ ही जाता है ना? ऐसा ही होता है ना? Whenever you hear any new song that is a remix song, then the original song becomes famous. Similarly, when the plastic waste amendment are there in the rules, the question may come from the plastic rules 2016. Okay, plastic waste management rule 2016. Now, the first responsibility of the ensuring plastic waste was taken to the rural areas. Previously, the plastic banning was limited to the urban areas. Okay, but this has been taken to the rural areas also. This is the first time, and these rural areas, they are made responsible under the Gram Panchayat, not Gram Sabha. Okay, the question may come that under the plastic waste management rule, Gram Sabha is responsible for providing the responsibility. No, it is Gram Panchayat. Is it clear? First thing. Second, the responsibility will be of the waste generator. It means the extended producer responsibility was introduced. अगर there is a public event, जो event organize कर रहे हैं उनकी responsibility होगी to segregate the waste. जो आप waste segregate करेंगे, that will not take away or that will not reduce your fees. You have to pay the local fees to the local body. The fees has to be paid. जो retailers और street vendors हैं, they have been providing the responsibility. जो plastic bags हैं वो सिर्फ वही जितने microns के permit है उतने दें, otherwise there can be fines. Plastic carry bags available होंगे only with the pre-registered shopkeepers that are paying with the registration fee. Okay, then the amount that was taken as a fees that will be used for waste management. A manufacturing use of non-recyclable multi-layer plastics were to be phased in 2 years. जो इसीलिए 2022 में नए rules आए हैं, ठीक है? It was because of this clause only that there are new rules. Extended producer responsibility there, and there will be a centralized registration system for plastic manufacturing that we are calling about the EPR portal. Okay, we just read. So these are about the plastic waste management rules. कोई बच्चों डाउट हो तो बता दीजिए, वरना आगे कोई डाउट हो तो बता दीजिए. Yes, no. No? Very good. चलिए आगे बढ़ते हैं. Now the government has released green hydrogen and green ammonia policy. कौन सी मिनिस्ट्री ने रिलीज करी है? ग्रीन अमोनिया पॉलिसी एंड ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी. Ministry of Power. Ministry of
पावर में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि पता लगा सब कुछ पढ़ लिया और भूल गए, वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट थी, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल वो थी, एनर्जी थी, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ पावर थी। तो दिस पॉलिसी ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया, ये दोनों सेम नहीं होते, एक बात सबसे पहले समझिएगा। बिकॉज द पॉलिसी इज रिलीज सेम, दैट डज नॉट मीन दे बोथ आर सेम। ग्रीन अमोनिया इज डिफरेंट, ग्रीन हाइड्रोजन इज डिफरेंट। तो की प्रोविजंस क्या है कि ये चाहते हैं कि अगर कोई भी प्लांट फॉर यूजिंग द ग्रीन हाइड्रोजन सेटअप होता है बिफोर जून 2025, that plant can have the free interstate transmission for 25 years. If you have set up a plant before 25th June 2025, then for 25 years you can have the interstate transmission system. You may not need to pay the fees. For example, if you are using the solar energy from Rajasthan to produce the green hydrogen in Assam, you do not need to pay the charges for transmitting that energy. Here, this will be idea. Second, the producers will be allowed to have bunkers for the storage of green ammonia close to the seaports. Okay, they can store it in the bunkers at the ports. Now, the target to produce green hydrogen or green ammonia is raised to 5 million tons by 2030. The target is to produce 5 million tons 2030. Green hydrogen and ammonia will be allowed to be part of the renewable energy certificate. It means when you are using them, that will be considered as the use of renewable energy. If the distribution companies, DISCOMs jinko bolte hain, power distribution companies, they are using it, they have to use it at a concessional. Okay, they should not be using or giving the green hydrogen supply, or their electricity for the producing of green hydrogen should not be at the same price. It should be as a reduced price. Okay, then the procurement of any energy produced through green hydrogen or using the green ammonia, that will be part of the renewable purchase obligation. Organizations are under obligation to purchase the renewable energy. If they are purchasing the green ammonia or they are purchasing the green hydrogen, that will also be a part of renewable purchase obligation. Okay, there will be a single portal for having all these clearances for setting up the plants, and this portal will be set up by the Ministry of New and Renewable Energy. Scheme launched by Ministry of Power, but the portal will set up by New and Renewable Energy. Now, green hydrogen होता क्या है? क्या आप लोगों को पता है? ग्रीन हाइड्रोजन, क्योंकि हमारे लिए क्वेश्चन ये नहीं आएगा पॉलिसी क्या, क्वेश्चन आएगा ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है। हाइड्रोजन ऑफ ग्रीन कलर, सिंपल। From natural source, water. क्या बेटा? जिसकी प्रोडक्शन में एमिशंस और कम होंगे, वो इसकी प्रोडक्शन में एमिशंस कम होंगे। नहीं बेटा, ये वो हाइड्रोजन है, दैट इज फर्स्ट चीज दिमाग रखिए, दैट इज प्रोड्यूस्ड थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस. वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, देयर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज सेपरेटेड. Then this hydrogen is used for producing the energy. That is the green hydrogen. And this green hydrogen is having advantages कि ये use हो सकता है as a normal fuel. आपने देखा है दिल्ली में there are new buses that are introduced which are called as hydrogen, green hydrogen buses. The Delhi government is running buses on green hydrogen. Very few, but they are. Okay. Now, hydrogen का benefit क्या? Question ये भी आ सकता है क्योंकि what are the following are, which of the following are benefits of or the properties of hydrogen? बेटा हाइड्रोजन कलरलेस और अडरलेस होता है, ठीक है? कलरलेस होता है, अडरलेस होता है. तो क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज ग्रीन इन ग्रीन हाइड्रोजन? इट इज नॉट द कलर, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ग्रीन हाइड्रोजन एंड द एंड प्रोडक्ट ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन व्हिच आर ग्रीन. दिस इज द लाइटेस्ट गैस, ये तो पता ही आपको, सबसे पहले हाइड्रोजन ही आता है. उसके बाद इट हैज अ एक्सट्रीमली लो बॉइलिंग पॉइंट, तो आपको इसको गैस में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है. नो फ्लेम्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन बॉइल्ड and it burns clean. It means it does not produce any carbon dioxide or any other oxides.
राइट? नाउ ग्रीन अमोनिया क्या होता है? व्हाट इज ग्रीन अमोनिया? ग्रीन हाइड्रोजन समझ, अमोनिया जो ग्रीन कलर का होता है, बताइए। अच्छा, आप लोगों को नोट्स तो भेज दिए थे, क्या आपने देखे या फिर देखा नंबर ऑफ पेजेस, ओ हो छोड़ो हमसे नहीं हो पाएगा, है ना? बताइए। ग्रीन अमोनिया नहीं होता क्वेश्चन बेटा, यही आएगा, व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन, व्हाट इज ग्रीन अमोनिया। अब अमोनिया, अमोनिया यूज कहां पर होता है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, व्हाई डू वी नीड अमोनिया? fertilizer. Because it is used in the fertilizer industry. Now अमोनिया अगर हम जनरली वी आर इंपोर्टिंग अमोनिया, लेकिन ग्रीन अमोनिया इज यूज्ड वेयर द अमोनिया इज made by using the green hydrogen and the nitrogen from the air. The using or the making of ammonia by using green hydrogen and nitrogen from air. Sir, please explain blue and gray hydrogen. बेटा ब्लू हाइड्रोजन मतलब पानी में जो है ना, पानी में जो है। ग्रे हाइड्रोजन जो रिसाइकल्ड है। सर ग्रीन हाइड्रोजन में मेनली आपको बताया था इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर का करेंगे तो होगा ग्रीन हाइड्रोजन। हाँ बेटा। और ब्लू हाइड्रोजन में वाटर। ग्रे वाला रिसाइकल्ड। जो बेटा ग्रे है जो मतलब रिसाइकल, कहीं किसी भी चीज के यूज होने के बाद जो निकलता है ना, जो किसी काम का नहीं बचा, वो ग्रे हाइड्रोजन। ठीक है, जो मतलब जो हाइड्रोजन हमारा किसी फॉसिल फ्यूल के बर्न होने के बाद। ठीक है, एक काम करिए आप लोग लिख लीजिए, व्हाट इज द डिफरेंस इन ग्रीन ब्लू एंड ग्रे। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर। तो पहले ग्रीन हाइड्रोजन तो हम लोग समझ गए हैं। ग्रे हाइड्रोजन लिखिए, it is derived from natural gas and fossil fuels. It is derived from natural gas and fossil fuels, and it is the least renewable form of hydrogen. Least renewable form of hydrogen. Right? Blue hydrogen क्या होती है? When the carbon dioxide is not emitted when the fossil fuels are burned, it is captured. Okay, it is captured. सर रिपीट कर देंगे एक बार फिर। आप लोगों को एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखवा देते हैं। ठीक है, अब लिख रहे हैं तो एग्जैक्ट ही लिख लेते हैं। It is derived from natural gas. It is derived from natural gas. It is derived from natural gas, and it is a low carbon emitting form. It is a low carbon emitting form of burning the fossil fuels. Low carbon emitting form of burning the fossil fuels, because burning the fossil fuel, because the gases are not allowed to, because the gases are not allowed to emit in the atmosphere, because the gases are not allowed to emit in the atmosphere, and they are captured
are captured as a part of carbon capture and storage. Carbon capture and storage. Clear? Clear? Very good. So green ammonia कहाँ mainly use होता है? It is for the use in the fertilizer industry. Okay. Now, National Green Tribunal has directed for constituting a fly ash management and utilizing mission. सबसे पहले इसके लिए समझते हैं fly ash होता क्या? Do you know what is fly ash? Do you know what is fly ash? फोसिल फ्यूल्स के जलाने के बाद जो सूट निकलते हैं पावर प्लांट से, बेटा क्या क्या होता है उसके अंदर? ये यूपीएससी क्वेश्चन कि फ्लाई ऐश के अंदर क्या क्या होता है। तो सबसे पहले समझेंगे इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ कोल बर्निंग पावर प्लांट। जहां पर भी कोल बर्न होता है ना या लिग्नाइट बर्न होता है वहां पर से फ्लाई ऐश इट इज प्रोड्यूस्ड। दिस कंसिस्ट ऑफ this composition you must write. It consists of silicon dioxide, aluminium oxide, silicon dioxide, aluminium oxide, ferric oxide, and calcium oxide. Silicon dioxide, aluminium oxide, ferric oxide, and calcium oxide. It consists of these four. ये बच्चों काम कहाँ आती है? कुछ भी बना लो, रोड बना लो, इससे आप ब्रिक्स बना सकते हो, किसी भी चीज की फिलिंग में इट कैन बी यूज। आप इसको एग्रीकल्चरल एरियाज में डाल सकते हो कि नहीं डाल सकते? एग्रीकल्चर फार्म में वेरी गुड, पता लगा जोश जोश में जो है वहां भी वो भी टिका। हाँ, खेतों में डाल दो, फर्टिलाइजर बन जाएगा, क्योंकि बेटा बहुत सारे हैवी मेटल्स हैं। इट विल लीड टू सॉइल पोल्यूशन। ओके, इट इज वेरी टॉक्सिक. It may trigger heart diseases, cancer, respiratory diseases or stroke. Now, जब ये पानी मिल जाती है तो it leads to the leaching of the heavy materials in the ground. Okay, it can lead to leaching. Now, soil के में soil pollution हो सकता है. It is like Portland cement, but it is different from Portland cement. So, question आ सकता है that fly ash is nothing but Portland cement chemically. That is wrong. क्या होता है Portland cement ये आप देख लेना, ठीक है? लेकिन chemically it is not same as Portland cement. Okay, but it can be used as a cement. Okay, fly ash can be used as a cement. Okay, अब क्या है, गवर्नमेंट ने क्या जो एनजीटी है, now NGT, is it a constitutional body or statutory body? NGT, National Green Tribunal. बेटा statutory body. Okay, NGT 2010 एक्ट के थ्रू it was established. Now NGT ने एक fly ash management and utilization mission के लिए डायरेक्ट किया है, जिससे कि जो fly ash है वो कैसे it should be put or it should be drained or there should be handling of the fly ash, because there have been certain dumping of fly ash which is causing various problems in the soil region. Okay, and also in the water body. तो उसको डंपिंग के लिए एक मैनेजमेंट रूल बनाया है। तो उसके लिए उन्होंने जो मिशन बनाया, दिस मिशन विल बी हैविंग द नोडल एजेंसी व्हिच इज द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. इट इंक्लूड्स द मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड पावर एंड द चीफ सेक्रेटरीज ऑफ यूपी एंड मध्य प्रदेश. ओके, इन दिस मिशन. इस मिशन की मीटिंग हर मंथ कंडक्ट होगी फॉर 1 year एंड दे विल आइडेंटिफाई द यूज ऑफ द फ्लाई ऐश मैनेजमेंट. ओके, now what are the fly ash notification 2021? उन्होंने बोला पहली चीज कि जो भी कोल और लिग्नाइट के पावर प्लांट है, they must ensure 100% utilize or the mandatory disposal of fly ash in eco-friendly manner.
जितने भी कोल एंड लिग्नाइट वाले पावर प्लांट है, दे शुड इंश्योर 10, 20, 50% नहीं, 100% डिस्पोजल ऑफ द फ्लाई ऐश इन एन इको फ्रेंडली मैनर। ये नहीं डिस्पोजल है तो बाहर कट्टों में भर के फेंक दिया, it should be in the eco-friendly manner. Clear? Now, if there is no compliance, then the principle will be used that is called as polluter pays principle. It means if they are not complying, they have to pay a fine. Kitna fine? 1,000 rupees per ton of unutilized ash. Okay, there have to be fine. अब ये फाइन जो है, it will be collected by the CPCB, Central Pollution Control Board, and they will be disposing of that fly ash that was not disposed by those power plants. Now, in case fly ash is used for various purposes, then the power plant will have to give that fly ash for free of cost. Delivery करनी है, ठीक है? ये नहीं कि पढ़िए ले जाओ, deliver करेंगे power plants, ठीक है? अगर they are giving it in bulk, right? So there can be an agreement that this much price we'll be giving for the fly ash or this much cost of transportation the other party is sharing. ये हो सकता है. Now new fly ash क्या है? That there has to be enforcement, monitoring, audit and reporting of the fly ash utilization by the CPCB and State Pollution Control Board. Okay, and the power plants has to have a monthly information on their portal. The power plant has to have monthly information on their web portal regarding the fly ash utilization. अब इसमें डिफरेंस क्या है मिशन में और जो नोटिफिकेशन? सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि विक्टिम्स भी एनवायरमेंटल डैमेज सीक कर सकते हैं. विक्टिम्स कैन आल्सो सीक द एनवायरमेंटल डैमेज. क्लियर? ऑन साइट ऑफ साइट क्राइसिस मैनेजमेंट की भी बात है इसमें, व्हिच वाज नॉट देयर इन द नोटिफिकेशन ऑफ फ्लाई ऐश. ओके, दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस. ये फ्लाई ऐश से रिलेटेड है. क्वेश्चन आ चुका है फ्लाई ऐश पर, इसलिए हम लोगों ने बहुत ध्यान से चला. Are we clear? Yes or no? Yes or no? Very good. चलिए आगे बच्चों. चलो, there is a PACER initiative. So Ministry of Earth Sciences का initiative है. Its full form is Polar Science and Cryosphere Research Initiative. So Polar Science and Cryosphere Research Initiative, which is the initiative Ministry of Earth Sciences, क्या पढ़ता है? ठंडे एरियाज, ठंडी चीजों को पढ़ता है. क्रायोस्फीयर मतलब जो जमा हुआ है, पोलर मतलब जो पोल्स पे जो चीजों को पढ़ता है, दैट इज दैट इनिशिएटिव. कहां पर पढ़ता है? आर्कटिक में, अंटार्कटिक में काम करता है. इंडियन आर्क, इंडिया का आर्कटिक में जो एक मिशन है उसमें भी पार्टिसिपेट कर रहा है. मैत्री भारती में भी पार्टिसिपेट करता है, विच आर ऑन दी एंटार्क्टिकन रीजन. तो पेसर इनिशिएटिव आपको पता होना चाहिए किस चीज के लिए, ठीक है? तो इट इज फॉर पोलर साइंस एंड काइरोस्फीयर रिसर्च इनिशिएटिव. क्लियर? Are we clear? अब बेटा कहाँ से आवाज आई? सर एक डाउट था पीछे वाले से. बोलो बोलो. मैं इसे पॉलिटिक्स के थोड़ा सा लिंक कर रहा था, तो ये बता दीजिए, जो सीपीसीबी फाइन लेगी वो कहाँ जाएगा? जब सीपीसीबी जो फाइन कलेक्ट करेगी वो कहाँ जाएगा? वो सीपीसीबी अपने पास रख के उसको यूज करेगी फॉर द डिस्पोजल ऑफ फ्लाई ऐश. ओके, डिस्पोजल ऑफ फ्लाई. मैं ये जानना चाह रहा था कि सर वो जो फाइन लेगी वो फाइन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं जाएगा. ओके, यही क्वेश्चन है ना, सीएफआई में जाएगा कि नहीं जाएगा? यस सर. हाँ, नहीं जाएगा, क्योंकि बेटा अगर सीएफआई में जाएगा तो सीपीसीबी को पार्लियामेंट से पैसे निकलवाने पड़ेंगे. पेसर इनिशिएटिव. अब एक अलायंस है दैट इज कॉल्ड एज रिवर सिटीज अलायंस. रिवर सिटीज अलायंस इज एन अलायंस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. इसका पर्पस क्या है? नदी किनारे जो शहर हैं उनको अच्छा बनाओ. नदी भी बढ़िया, शहर भी बढ़िया. रिवर, देयर आर various urban areas which are across various rivers. Banaras, Kanpur, Prayagraj, Lucknow, right? Ayodhya, right? There are various regions, right? So this is an alliance of Jal Shakti Ministry and Ministry of Housing Affairs. कि इन दोनों को बढ़िया कर दो. बस कैसे बढ़िया करेंगे? कि मेंबर प्लेटफॉर्म बन देंगे मेंबर एयर सिटीज को कि हाँ जी हमारे यहाँ बढ़िया है.
एक दूसरे के अडॉप्ट करेंगे फीचर्स, आपने ऐसा किया अच्छा हम भी ऐसे करेंगे, एंड गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करेंगे टू प्रोवाइड स्टेट ऑफ द आर्ट। क्लियर? कोई भी सिटी, ओके, कोई भी सिटी एलिजिबल है, लेकिन पहले जो है इन्होंने कहां पे फोकस किया है, मेजर सिटीज अक्रॉस मेजर रिवर्स। क्लियर? आर वी क्लियर? यस और नो? कोई डाउट हो तो बताइए। देखो जिस चीज को जितना पढ़ना उतना ही पढ़ेंगे। अब हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट के अंदर एक फंड है दैट इज कॉल्ड एज नेशनल अडेप्शन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज। तो लोकसभा में रिसेंटली इंफॉर्मेशन की इस फंड ने बहुत अच्छा काम किया। तो काम अच्छा किया है उसके लिए हमें जानना होगा व्हाट इज दिस फंड। तो दिस फंड इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, नेशनल अडेप्शन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज। दिस इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम that was established after the Paris Climate Deal, Paris Climate Conference, where the aim is to ensure the adaptation to climate change for the state and union territories which are vulnerable to adverse effect of climate change. यानी कि एक फंड है जो क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए मदद करता है। ओके, दिस इज द पर्पस। क्या क्या आउटकम है फ्रेमवर्क में? They include the reduced key risk and adverse effect of climate change in water and agricultural sector. They maximize multi-sectoral, cross-sectoral benefits, co-benefits to meet the challenges of water and food security, human development, poverty alleviation, livelihood security, enhance awareness, strengthen institutional and individual capacity to reduce risk associated with climate-induced socio-economic and environmental losses. Okay? समझ में आया? नाउ रिवार्ड प्रोजेक्ट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, प्रोजेक्ट किस चीज से रिलेटेड है? तो दिस प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू वाटरशेड डेवलपमेंट। ओके, दिस इज रिलेटेड टू वाटरशेड डेवलपमेंट। द फुल फॉर्म ऑफ दिस रिवार्ड प्रोजेक्ट इज रिजुविनेटिंग वाटरशेड्स फॉर एग्रीकल्चरल अलायंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, रिजुविनेटिंग वाटरशेड्स फॉर एग्रीकल्चर रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव वाटर डेवलपमेंट प्रोग्राम। आपको नहीं याद रहेगा इसकी फुल फॉर्म, ठीक है, याद करने की कोशिश मत करना, बस you must know it is for the watershed development. Clear? This initiative is the initiative of Government of Karnataka, Government of Odisha and the World Bank. Okay? ये तीन गवर्नमेंट है, उड़ीसा, कर्नाटका एंड वर्ल्ड बैंक। ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं that there has to be the restoration of 26 million hectares of degraded land by 2030 and doubling the farmers' income of 2023. Okay? तो वाटरशेड डेवलपमेंट करेंगे, डिग्रेडेड लैंड को ठीक करेंगे और फार्मर्स इनकम को डबल करेंगे, एंड दे ऑल लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। ठीक है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ओके, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में आएगा इट इज इनिशिएटिव ऑफ कर्नाटक उड़ीसा, बोलो अरे कहाँ दोनों इतने दूर दूर है, ये दोनों एक साथ कैसे कर लेंगे? मुझे आप कहो हमने ज्योग्राफी पढ़ी है, हमें सब पता है, तो यहाँ गलत हो जाएगा। कर्नाटका, उड़ीसा एंड वर्ल्ड बैंक। Is it clear? Reward project. कोई दिक्कत, कोई टेंशन? Sir, what is the exact meaning of watershed? बेटा watershed region, the area which is within the vicinity, which is within the premises, or premises तो नहीं बोलेंगे, river basin of one water body. एक रिवर है, उसके रिवर के आसपास जितना भी एरिया है, that will be forming one watershed. Okay, this is one meaning. Other meaning is the region which is divided by a watershed divide. मतलब एक पहाड़ के इस तरफ और उस तरफ का region, that also forms a watershed. लेकिन for the agricultural purposes, the area within the river basin of a river or a water body is called as the watershed. मतलब एक water body किस किस area को affect कर सकती है, that is watershed. Okay. Sir, it is, or is it water deficient area? It is not. It is water-rich region, or it is the region which could have become water-rich if that water body was clearly possible. For example, in Delhi there is a river Yamuna, right? Now the pollution in river Yamuna is affecting the areas close to the river Yamuna, because these areas forms its watershed basin. So if the water body is good, the watershed will be good.
If the water body is facing drought, the area could also be having problems. It is not necessary that it is always water rich. Okay. Okay, sir. It is just a way of dividing the areas that are within one river or within one water body. Okay. Now there is a system that is called a system of air quality and weather forecasting and research that records the air pollution. ठीक है, question ये आ सकता है that which body has developed this? The software was developed by Institute of Tropical Meteorology Pune, and it is operationalized by Indian Meteorological Department. It measures the air quality of metropolitan cities. And what are the areas or what are the parameters that it measures? It measures PM 2.5, PM 10, ozone, carbon monoxide, nitrogen oxide, sulfur dioxide, benzene, toluene, xylene, and mercury. Okay. PM 2.5, PM 10, ozone, carbon monoxide, nitrogen oxide, sulfur dioxide, benzene, toluene, xylene, and mercury. Question ये आता है, how sulfur is different from AQI, air quality index? How sulfur is different from air quality index? How sulfur is different from air quality index? बताइए. Number of pollutant monitored. Very good. What are the monitored pollutants in AQI, बेटा? हम वही सोचा, राजेश है कहाँ? आवाज आई. हाँ राजेश. उसमें 8 है शायद. 1, 2, 3, 4, 5, 6. एक्स्ट्रा क्या है? छह तो ये हैं, बाकी दो कौन से हैं? कोई नहीं बताएगा. Ammonia, sir. Ammonia, very good. One more. Yes, ammonia is there. One more. नहीं बता रहा कोई? अच्छा बता रहे हैं. Lead, very good. So बेटा, in the AQI, the parameters are PM 2.5, PM 10, ozone, carbon monoxide, carbon dioxide कहीं भी नहीं है, ध्यान रखिएगा. Nitrogen oxide, sulfur dioxide, lead and ammonia. These are in the AQI. In this there are 10, benzene, toluene, xylene and mercury. Lead and ammonia are not there. Okay? अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन फिर बोले, what does PM 2.5 means? फुल फॉर्म मत बताइएगा. Particulate matter 2.5. What is PM 2.5? The size of the matter. Very good. Size of particles in which unit? Having diameter less than 2.5 micrometer. Very good. Size 2.5 micrometer. Very good. So this is the meaning. ये क्वेश्चन AQI पे आ सकता है because pollution is never an outdated topic, right? Pollution is always trending. So question में गवर्नमेंट ने बोला परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम कुछ फायदा नहीं दे रही है. Okay? रिपोर्ट रिलीज हुई सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट और उन्होंने बोला द परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम कोई फायदा नहीं दे रही है. तो फायदा नहीं दे रही है तो पता होना चाहिए कौन सी स्कीम है. तो स्कीम ऑफ ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी. परफॉर्म करो, बढ़िया से काम करो,
अपने टारगेट्स अचीव करो, टारगेट से ज्यादा करोगे बेच दो। ओके, so there will be energy saving certificates. For example, if you have to save every day 10 kilowatt, or you have to save every day 1 megawatt of energy, and you save 2 megawatt of energy, you can sell that 1 extra megawatt of energy as a part of energy saving certificate. You can trade it. Okay, you can earn money, but it is not giving benefits. क्यों? क्योंकि बेटा जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं वो सोच रही हैं जब हम खरीद सकते हैं तो बेकार मेहनत क्यों करें कम करने की, कोई हमारे लिए मेहनत कर रहा होगा, है ना? तो they were purchasing it. That is why it was not giving any benefit. It was an initiative of, it is still functional, it is an initiative of the Bureau of Energy Efficiency. Is it clear? There are two exchanges in which they are traded, Indian Energy Exchange and Power Exchange India Limited. Okay? Are we clear? Are we clear? Yes or no? Very good. चले आगे बच्चों. ना गवर्नमेंट ने बोला कि जो फंड है ESG फंड, बेटा ESG फंड क्या है? वो म्यूचुअल फंड जिनका फोकस होता है इन्वायरमेंट को सेव करने में, सोशल जस्टिस के लिए या फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए. These are called as ESG funds. Okay, these are the type of mutual funds. They are focused upon environment, social justice and the governance of the corporates. तो उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे जब पैसा लगाया जाता है तो ESG म्यूचुअल फंड होते हैं. बोले अच्छा काम कर रहा है, बहुत बढ़िया बातचीत है, सेबी इसको मॉनिटर करता है. ठीक है, ओके, very good. Now there is an initiative for the protection of the coastal zones. हमारे लिए coastal zones बहुत important है because India has a very long coastline, right? And so many people are dependent upon their livelihood over the coastal areas. So there is an initiative called as the initiative which is BEAMS, Beach Environment and Aesthetics Management Services. The Ministry of Environment, they believe that this initiative is very important for the management of the coastal zone. So BEAMS initiative क्या है? It is the Beach Environment and Aesthetic Management Services, which initiatives work, this initiative work under the Integrated Coastal Management or Integrated Coastal Zone Management, ICZM. That was through an initiative of the Integrated Coastal Management. Okay, that was an initiative of the Parliament, Integrated Coastal Management Zones, where they want to have better coastal areas by abating the pollution, providing sustainable livelihood and the protection of the coastal ecosystem and ensure that they are having a healthy environment. Integrated Coastal Zone Management, it is for the management of the coastal areas and initiative of World Bank. Okay. बीम्स किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन आ सकता है. बीम्स रिलेटेड टू व्हाट? दिस कैन बी अ क्वेश्चन. नाउ देयर इज अ प्रोजेक्ट बोल्ड. बेटा बोल्ड इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इनिशिएटिव is of Khadi and Village Industries Commission KVIC, which is a undertaking of Ministry of Micro, Small and Medium Industries, MSME. ये project bold is related to the planting of bamboo trees from Assam in Udaipur, Rajasthan. Okay, so this initiative of KVIC is for planting of bamboo trees from Assam in Udaipur, Rajasthan, and 5,000 such saplings were placed so that a type of oasis can be developed in the desert areas. Okay, so it is particularly for the development of oasis in the desert areas so that the parts of the Rajasthan, they can have green patches, which is not available to in a large extent. Okay, project bold समझ में आ गया? गवर्नमेंट ने एसओपीज निकाली है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि जो कंपनी फंक्शन कर रही है उनको कैसे कैसे काम करना है, क्लियरेंसेस कैसे लेनी है. तो उन्होंने बोला कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो बिना क्लियरेंस के काम कर रही हैं, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो क्लियरेंस ठीक से लिए बिना काम कर रही हैं. देयर आर सर्टेन कंपनीज और सर्टेन प्रोजेक्ट्स व्हिच आर वर्किंग विदाउट क्लियरेंस.
there are certain projects which are working with clearance but without proper clearance. Okay, without proper clearance. So in such cases, there will be fines of 1% of the total project cost and 0.25 of the total turnover during the violation. अगर कोई भी ऐसे प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं, there will be 1% of the total project cost as the fine and 0.25 of the turnover during that violation as the fine. ये जो है नए एसओपी. क्लियर? समझ में आ गया कि कुछ प्रोजेक्ट जो बिना क्लियरेंस के और कुछ प्रोजेक्ट जो क्लियरेंस ठीक से ना लिए काम कर रहे हैं उन पे लगेगा फाइन. क्लियर? अब एक नया कमीशन बना है फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, क्योंकि द पोल्यूशन इन दिल्ली एनसीआर रीजन, इट इज अ एनुअल exercise now, it is an annual feature, it is not sometimes, and for that Supreme Court ने एक एजेंसी बनाई थी Environmental Pollution Control Authority, Environmental Pollution Control Authority, and this authority was now given a statutory status and it will be called as the environmental or it will be called as the Commission for Air Quality Management. Okay, so the environmental pollution in Delhi is now to be handled by Commission for Air Quality Management. Clear? Commission for Air Quality Management. Abhi authority, it will be a statutory authority. This authority will be having the composition of a person who was either a chief secretary of a state or secretary to the government of India. The person will be holding office for 3 years or till the person reaches the age of 70 years. Other members from various ministries will be there. The experts from Central Pollution Control Board, ISRO and civil society will also be there. इनका काम क्या है? डायरेक्शन इशू करना, कोई कंप्लेंट आती वो देखना, पैरामीटर्स ले करना, ये इतना पॉल्यूशन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कोई अगर वायलेट कर रहा तो उसको पकड़ लेना, और अगर कोई भी स्टेट ने गाइडलाइंस दी उसको ओवररूल भी कर सकते हैं. These are the ideas under the Commission for Air Quality Management. Clear? समझ में आ गया है? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? ये न्यू प्लेजेस जो है, अब आज के लिए बहुत पढ़ लिया आपने, इतना एनवायरमेंट इससे ज्यादा पढ़ोगे तो आप लोगों के दिमाग में पोल्यूशन हो जाएगा, है ना? हम लोग विल गिव 2-3 more days टू एनवायरमेंट. एनवायरमेंट क्रैश कोर्स वालों को ऑलमोस्ट ओवर हो गया है, शायद 5-6 लेक्चर्स हो गए हैं शायद. बेटा कहां तक पहुंच गए हैं क्रैश कोर्स में? Sir, pollution you are doing ना, ठीक है. So tomorrow you will be having an environment class. We'll let the environment to be finished by Monday, and then regularly we'll do the current affairs. Okay, when regularly we'll do current affairs, क्योंकि एक बार environment खत्म हो जाएगा, फिर current affairs and other subject alternatively will be functioning, because our focus is to complete environment first. सबसे ज्यादा important topic था, इसलिए हम environment को regularly चला रहे हैं, current affairs को रोक के थोड़ा. Are you clear? So we'll have our current affairs class from Tuesday onwards regularly, so that environment का topic खत्म हो जाए. Clear? And within the next week we'll complete environment current affairs. Within the next week or in first 2 days of the next week, next to next week. ठीक है? अप्रैल में हम लोग खत्म कर देंगे environment and economy शुरू कर देंगे. Okay बच्चों? Very good. Do we have any doubt? Do we have any doubt? Yes or no? Okay. So, beta. So tomorrow you will be having your environment, and then Monday environment. Saturday and Sunday we'll let you know which class will be there. From Tuesday onwards, regularly we'll have our current affairs. Okay? Are we clear? Okay. Thank you very much. Beta. Any doubt? No. Okay. Thank you very much.